Hey, touch delay. Such a delay. So this is what happened, like when you have so many screens open and then all of a sudden you Yes, don't yes. you don't know what's playing. I feel like Yeah, this online thing is it's a bit problematic sometimes because you don't yeah, know which tab is open, which audio is mute, and which audio is playing in the background. yeah. The main thing I wanted to, Taşidele. like sorry, the main thing I wanted other people to know about your YouTube channel. So I opened your YouTube channel in a different file. So the slide and all of a sudden anyway, the first thing first, Gonda, the Changmal, I'm gonna say a few words in Tibetan. All of Yeah, us sure. can jump. And Changmal tested hacker sang that having that mit Changmal gi kengi re nganzo de sani shunu Toronto la ta ngaranzo gi taring de fifth season gi 11 episode la ta main guest chick handa kra kyaga gita kazin chang gi longye chi tong tong idominde. 아니 쿠란 기타 메인 쿠란 기텐라 니르베 미ශ්라 리드라 아니 쿠란 어저 탄다 데 라이프 기타 라커 기 나이다 데 레레 아니 데 레베 김제 슈크침부디 카인라 두겁수 다 카지 쿠란 기디 비디오 디 업로드 치니 페바카시 기 쿠란 저 유튜브 채널 룩니 디 비디오 디타 인지 칭니라 나 바이럴 로고라 미 몽부 슈 스타도 동다 동다 따도 so 아니 쿠란 기 유튜브 채널 도 아니 신이 미 직동 기타 셈데 so di sadangi testik ngegi tuyengi chashi chimba. So kaina mene ta thangbu dela ta Quran doji na ta pedyen kola pe thona che Quran nyemani chik khala orta chik kyagali yingdu gup Quran pedyen dela pe mangbu thona resha. So anyway, Mishra ji, can you आप थोड़ा introduction दोगे अपने के बाद में क्योंकि I feel like people who live in Canada, US, like they want to know about you because क्योंकि आपका जो वीडियो था ना जो वीडियो बनाया था वो बहुत वायरल हुआ था I know. I'm not sure whether आपको मालूम है कि नहीं क्या बोलता है वो आपका वो YouTube चैनल में it was just like 4 दिन में अभी अभी देख रहा हूँ वो 1000 व्यू हुआ ना so Yes. yeah, so what I noticed was जब वो वीडियो मेरे को मिला था ना like I wasn't in town, I was out of town. So जब वो वीडियो मेरे को Okay. मिला someone downloaded your video and uploaded in he or she I don't know like in I their know. I know. I know. I know. yeah. So I know. I know. yeah, so in that उसके channel पे ना वो वीडियो बहुत almost I would say like probably more than 30-40 thousand. So आपका Oh वीडियो wow. yeah, so वही बोलना चाह रहा हूँ मैं. That's I wanted to tell you, like how like your video was really effective within our Tibetan community because जब आप अपने channel में देखेगा ना, it's only like 1,000 view, 1K view 1000. Yes. in the four. But other people who downloaded, I think there was two YouTube channel that uh, uploaded your video, and it was like more than Yes. 30,000 views and it's been viral in a Facebook and you just name it. So anyway, so I just want to say thank you for making that video from bottom of my heart. पहला मैं Well, वो I want to say that पहला मैं वो बोलना चाहता हूँ. Sorry मेरा हिंदी word कोई निकलता है कोई नहीं निकल रहा है. So I'm doing my best. no, 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 I'm very much habitual कि जब टिबेटन हिंदी बोलते हैं और जब मैं टिबेटन बोलता हूँ हम दोनों का एसेंट बिल्कुल सेम होता है तो नो Yeah, प्रॉब्लम इन दैट इट फील्स वेरी आई फील वेरी हैप्पी yeah, बिकॉज इंडिया में जो टिबेटन रहते हैं वो बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं बहुत फ्लुएंटली yeah. तो You मैं भी have no टिबेटन सीख रहा हूँ yeah. So okay, I'm not gonna talk about you anymore now because Uh, okay, so Misha, can आप थोड़ा introduction दो ना? Like you just talk about yourself, like your study, your this and that, what you do, a little bit, a brief introduction about yourself. Yeah. my first encounter with Tibetans started I will tell you when I was in class 7th. So in class 7th there was a chapter in my Hindi book. The name of the book was Lhasa ki or, towards Lhasa. So I was very curious that where is this Lhasa?
because they like the writer, the name of the writer was Rahul Sankrityan. And he mentioned about how beautiful Lhasa is. So I was wondering that where Lhasa is, where Tibet is. And if you will look at the political map of the world, you won't be able to locate Tibet. It's known as the Tibet Autonomous Region of China. Cut to like when I was in class 10, हर सिटी में इंडिया में टिबेटन मार्केट लगता है, हर शहर में इंडिया में. तो मैं वहां गया. बट माई लाइक जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म स्टार्ट होता है जब व्हेन आई started my graduation in political science in 2016. In 2016, मैं political science class में बैठा हुआ था. I was there, and the person who later became one of my best friends, he was sitting just in front of me. So I thought he's from Northeast. So my teacher told me they are not from Northeast. You talk with them and ask from where they are. So I said, okay. And the name of the boy was Finso Tashi. And Finso Tashi was sitting in front of me. Finso Ishi was sitting behind me. And one of the closest buddies of mine, who is in France right now, Tashi Sring. Tashi Sring was sleeping in the class. So I was trying to wake him up. In my college, during that time, there was around 80-90 Tibetan students. So I was like, I don't know, that's why I believe in the spirituality, previous birth, and soul correction so much. I don't know how. I started feeling very much connected towards Tibetans, very much connected. Okay. Then I asked one of my very close friends, who is a teacher in Arunachal, Rinchin Chodak, that I want to participate in your community. So he referred me to the then president of RTYC Baroda. From the core of my heart, I would like to extend my gratefulness towards RTYC Baroda, because of RTYC, Regional Tibetan Youth Congress Baroda, I started my activism. So the name of the president was Ishi Dawa. He is a journalist now. So he started inviting me to Tibetan functions. I went to Tibetan RTYC election. I started going to pressure. I started participating in 10 March. And slowly, not slowly, but very fast actually, Tibetans have become my family. And the entire college that time, वो जानता था कि Tibetans मेरी family की तरह हैं. So everybody, they became a part of my family. So I always referred not as Tibetan community, but as Tibetan family. After my first year, during second, third year, I literally became a part of Tibetan community. And this page, Tibet Today has given me this award of Tibetan of the Week. I guess I'm the first Indian who got this. So my interest started forming in Tibet. From Fresher, Farewell, RTYC, Foundation Day, Losar, everything. If you will go on my Instagram, you will find majority of my pictures is it Tibetan. You name it, Tenzin Chile, Dawa Sring, Northern, Dawa Chunzum, Sangit Chile. These all people are part of my family. So I used to invite them on Holi on my house. And we became so much connected. But sadly, during the COVID phase, we all became separated from each other. Some people migrated to France, Canada, America, Australia. Some became teacher. Then I started doing masters in history. And like many Tibetans, we have this a group of 50-60 people. It was the most iconic moments of our college life. The entire 50-60 group of Tibetans and me entering in college together. So it was a great time. Then I started doing PhD. And then I thought that no, now I will start writing my ideas and I will start writing a history of Tibet. So that if anybody will ask me that what Tibet is all about, what Tibetan struggle is all about, so I will give them my literature to read, to understand what Tibet is, to understand the warrior history of Tibet. And so I always say the warrior aspect of Tibetan freedom struggle, because people often
often don't talk about that. Tibetans ने अपना जो कंट्री है उसको बहुत इजीली गिव अप नहीं किया. 90s तक तिब्बत के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था अगेंस्ट चाइनीज. So it was a very iconic and very brave freedom struggle where people have literally fought it against Chinese forces, fought against Chinese forces. तो ये एक मेरा brief history है. Wow, since when you jab aapne bola since class 7 that you got so much interest about us and about yeah, I mean I'm just मैं वो सोच रहा था ना like हम लोग जब like when we are in like class 6 7 we don't really care about we just want to have fun. Anyway, yeah, I can tell and yeah अभी मेरे को पता चला कि like you were the time when you sent when I saw those pictures, I thought like you were just speaking, like but I didn't know that you got so much involved with the RTYC Baroda during back in those days. So much. Oh yeah. Still now, still now, still now, still now. The thing is that now students don't often like the students from Tibet अब वो इंडिया नहीं आ रहे हैं. पहले Yeah. आते थे, अब तो 0 स्टूडेंट आते हैं. Yeah. पॉपुलेशन कम हो रहा है. लोग या तो बैंगलोर जाना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं. फर्टिलिटी रेट कम है तो बच्चे नहीं आते. बस आज भी आरटीवाईसी के हर फंक्शन में मैं इन्वॉल्व. एवरी फंक्शन. That's द nice. प्रेसिडेंट ऑफ आरटीवाईसी बड़ौदा like Tenzin is like my brother. Nima, Sultrim Nima. Oh, that's nice. Sultrim Nima is so RTYC, like I will give entire credit to RTYC. Entire credit. RTYC के थ्रू ही मेरा करियर शुरू होता है. RTYC के थ्रू ही मैं अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलता हूँ. Oh wow. एंड उसी कनेक्शन के थ्रू आई वेंट टू टीसीवी गोपालपुर and I did some career mentorship of Tibetan students. And I really love this the geography of TCV Gopalpur. Such a peaceful campus. Like, you are from Homs or you are from TCV? Honestly, no. I'm none from the once I knew. Like no. I came here when I was really young in here, and then no, I've never been there. So Okay, so you brought up in Canada only. No. I was brought up in Nepal. मैं नेपाल से हूँ. Okay. But I did my Okay. study in India in Kalimpong. You know Kalimpong, Darjeeling, right? Darjeeling. CST Kalimpong. Yeah. CST Kalimpong. Yeah. So I was there in CST Kalimpong for 5 years, and then I moved here way back. Yeah, way back. When I moved here, I was the first Tibetan in my high school. मैं पहला Tibetan. Yeah. And after there was 2 high school, and अभी जो क्या बोलते हैं अभी यहाँ टोरंटो पे ना most people live in the Jemison. Jemison is a small street, but like there's a high school, Parkdale High School. In that high school, I think back in those days there was like 10 or 15 students in that high school, and my ex used to study there. My ex. So the high school where I studied, I was the only Tibetan. Okay. And after 3 or 4 months, my uncle's son will join Kiana. So anyway, I don't want to go, but I don't want to talk about myself. It's about you. So so bottom line, yeah, I came here way back. Yeah. So yeah, I always heard about Baroda because right now Baroda and yeah, I never मैंने कभी भी वो अभी क्या बोलते ट्रैवल नहीं किया वहाँ के एरिया पे. या बिल्कुल ट्रैवल करना है यहाँ पर टिबेटन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत जो आरटीवाईसी बड़ौदा है ना. इट्स अ गुजरात. बड़ौदा इज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात. वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया एक्चुअली. एंड यहाँ के टिबेटन स्टूडेंट जो है हिमाचल से साउथ से उत्तराखंड से बहुत दूर है. दे वेरी फार. Still, the way RTYC Baroda leadership have reorganized themselves, it is phenomenal. You know, you will find every single Tibetan on one single command. So the leaders of RTYC Baroda, you take the name Thupten Dolma, Ishi Dawa, Dechin Kusang, Tenzin Chunzen, Sultrim Nima, they all have united their community and they have actually restructured everything so beautifully that if you will come and you will see the management of RTYC Baroda,
It's phenomenal. right? Wow, wow. Yes. That's something like I've always may जैसे आपने वो बोला ना like I think it was you because I've seen your video and pictures way back, and then I used to be like, wow, like जब खुश होता है ना, like like non-Tibetan people who talk about our issue वो थोड़ा interest देता है ना. So I think I've seen your videos and pictures way back. I'm talking about way back. So I think during that was time. Anyway, so I wanted to ask you this. जब आपने वो अभी वो YouTube पे वीडियो डाला ना, like सॉरी बट मैं एक बोलना चाहता हूँ, अभी हम लोग जब लाइव जा रहे हैं ना, आपका वो हम्म। इतना फेस बहुत स्क्रीन के सामने आ रहा है, सो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव बैक अ लिटिल बिट, या क्योंकि आई डोंट नो व्हाई द जूम इज एक्टिंग वियर्ड टुडे. कभी कभी मैं आप अभी नो आई मीन हमारे व्हेन वी आर हैविंग कन्वर्सेशन राइट नाउ इट्स गुड, बट व्हेन इट्स गोइंग लाइव ऑन फेसबुक योर फेस वाज ओनली शोइंग ओके, दिस, so that's why I wanted to move you back. Yeah. Anyway, sorry अभी about ठीक है। अभी ठीक है. Sorry about the confusion. आणि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I wanted to ask you this. जब आपने वो वीडियो डाला ना, वो वीडियो में बोला है आपने कि Tibetan activism से आप थोड़ा दूर हो गया था, and now you wanted to start it. So can I ask like why you were away? Was it like okay, why you were away and आप फिर क्यों back आया? So that simple thing. लाइक यहाँ पर क्या हुआ था, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन एंड टू थ्री मोर थिंग्स, एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। एक्चुअली मैं टिबेटन स्ट्रगल से दूर नहीं हुआ था। मैंने ऑनलाइन जो एक्टिविज्म करता था, आई यूज टू अपलोड वीडियोस, मैंने वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया था बिकॉज Okay. ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, बिकॉज आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन टिबेट, Oh so I wow. need a because I need so much time to Oh yeah. write a book, because just to write one page I have to read many books. Oh I yeah. have to I have to refer to the original Tibetan sources. So I have one person who will translate the Tibetan document for me in English or in Hindi. And after that, I was very much busy in my PhD. I was very much involved in offline activism. But online, मैं अपने videos post नहीं कर रहा था because I personally, like बहुत time के बाद मुझे ये feel हुआ कि I have to write my book. I have to pen down my ideas. I have to pen down the original of history based on original Tibetan sources. तो क्या हुआ कि उस टाइम पर मैंने कहा कि आई नीड टाइम, लाइक 14 to 13-14 आवर्स मुझे कॉलेज में देना पड़ता है। उसके बाद 2 घंटे मुझे बुक लिखनी पड़ती है और 8 आवर्स ऑफ स्लीप। सो दैट्स वाई। बट देन मैंने एक चीज नोटिस किया कि एंड दिस विल जनरेट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, बिकॉज यू नो सी, अगर आप किसी कम्युनिटी को अपना मानते हो, यू कंसीडर देम एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, देन यू ट्राई टू लाइक शो देम द मिरर कि यार ये रियलिटी है हमारी। तो मैंने देखा कि कहीं टिबेटन कम्युनिटी का कोई इंसान है, वो फॉरेन के किसी इशू में इन्वॉल्व है, Mhm. वो अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, वेस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है उसमें इन्वॉल्व है। तिब्बत के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं। जहां पर टिबेटन्स मेजोरिटी में है किसी शहर में, मेजोरिटी नॉट इन डेमोग्राफिक सेंस बट उनका नंबर अच्छा खासा है, वहां भी लोगों को तिब्बत के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता। टिबेटन्स के जो दोस्त होते हैं उनको भी, उनके दोस्त जो टिबेटन है उनकी कंट्री के बारे में दे डोंट नो एनीथिंग। एंड देन आई थॉट दैट टुडे इज लाइक दशहरा, बैक देन दशहरा का टाइम था। Yeah. एंड इन दिस कल्चर दशहरा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस दिन हम मानते हैं कि धर्म की जीत हुई थी, राम जी ने रावण का वध किया था। तो आई सेड नो, आई हैव टू मेक अ वीडियो। मुझे अपना ऑनलाइन एक्टिविज्म भी स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से। मैं बुक लिख रहा हूँ, मैं टाइम मैनेज करूंगा, बट वो टाइम मेरा पूरा बुक लिखने में जा रहा था। तिब्बत का स्ट्रगल क्या था, खाम्पा लोगों ने कैसे वॉर किया, उत्सांग में क्या हो रहा था, आमदो के अंदर सिचुएशन क्या थी, तिब्बत सोसाइटी के अंदर जो है फ्रीडम स्ट्रगल को लेके देयर इज अ डिवीजन ऑफ आइडिया, एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। यू नो, यू विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन एवरी कम्युनिटी। Of course, बट yeah. द थिंग इज कि बट द थिंग इज कि व्हेन पीपल लाइक मिडिल वे वाले रामजन को क्रिटिसाइज करते हैं एंड रामजन वाले मिडिल वे से स्ट्रगल हुए, डोंट स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर यार। इट्स कंप्लीटली फाइन। किसी को प्रैक्टिकल अप्रोच पसंद है। आई एम अ 24-25 ईयर ओल्ड यंग मैन,
So if you will ask me, I will always say complete freedom, complete freedom, complete freedom. But isko like I got around 96% of positive comments. 4% of comments were always कि भाई आपको नहीं पता, आपको नहीं पता. I told them, let's debate live, let's discuss. And जो बुक्स के बारे में मैंने कहा था, जो इतना कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ, मैंने कहा था ऐसी बुक्स जिसने डिबेट पैदा की. But I noticed one thing, that sometimes people don't want to hear the truth. That's मैं true. मैंने मेजर टिबेटन सेटलमेंट के लोगों से करेक्शंस बनाए, जानने का कोशिश किया कि what is going on in your settlement. I have seen Tibetan people, and this will again generate many controversies. और मेरी लाइफ पे हमेशा controversies होती है, so I don't care much about controversies. Don't जब worry, मैंने same here. देखा कि and that's like we are not actors, we are not jokers. सबको खुश करके रखेंगे. Yeah. We are here to somebody's one girl texted me actually कि आप demotivate कर रहे हो. मैंने कहा motivation and demotivation is a subjective term. If अगर आपका कोई बच्चा है या आपका कोई दोस्त है वो गलत ट्रैक पे है, यू हैव टू टेल देम कि दिस इज द राइट ट्रैक. इसका मतलब डीमोटिवेशन नहीं होता, डीमोटिवेट करना नहीं होता. इसका मतलब है यू आर शोइंग देम द राइट पाथ. आई हैव सीन दिस द डिफरेंस बिटवीन मिडिल वे एंड रांगजेन. एक 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 एक, एक शायद अमेरिका की कोई टिबेटन लड़की थी, उसने मेरे पे वो वीडियो बनाया था और उसमें उसने कहा था कि खून बहेगा, ये होगा. किसी ने पूरा वीडियो ठीक से नहीं देखा और कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा कि मैं क्या बोलना चाह रहा. Oh, I didn't know that. Okay. हाँ, तो अब जो मेरा बुक है, एक बुक तो टिबेट की हिस्ट्री पे है, पर दूसरा बुक रांगजेन और मिडिल वे के आर्ग्यूमेंट्स पे है. टिबेट की सोसाइटी में क्लैरिटी भी तो हो. भाई ठीक है, आप मिडिल वे सपोर्टर हो, आप टेबल पे आओ. आप रांगजेन सपोर्टर हो, आप टेबल पे आओ. पर्सनली मुझे मेरी कंट्री को किसी ने कैप्चर किया है, मैं क्यों उसके साथ डायलॉग करूंगा. आई वांट कंप्लीट फ्रीडम. तो ये मेरा आइडिया है, डिस्कस करो ना. आप अगर बाइकआउट कर दोगे रांगजेन वालों को, या रांगजेन वाले बाइकआउट कर देंगे मिडिल वे वालों को, फिर हमारी सोसाइटी के एक डिवाइडेड कंट्री, डिवाइडेड कम्युनिटी कभी भी स्ट्रगल में जीत नहीं सकती. दैट्स द सैड पार्ट. बट द थिंग इज कि समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ. उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए 20 सेकंड का वीडियो देखा, एंड मैंने देखा उस पर कितने वीडियोस बने, कितने आर्टिकल बने. मेरा इंस्टाग्राम पूरा भर गया मैसेज से. हाउ यू सेड दैट majority comments, more than 95% comments are very positive because लोग वो फील करते हैं. Yeah. एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है. मैंने यूरोप के कुछ टिबेटन्स मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं. दे आर मैरिंग आउटसाइड देयर ओन कम्युनिटी. अब इस बात को आप पॉइंट आउट कर दो कि तुम किसी यूरोपियन से क्यों शादी कर रहे हो, या तुम किसी यूरोपियन से क्यों शादी कर रही हो. अरे फ्रीडम है, पर्सनल चॉइस है. वी डोंट हैव फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल. And when you are in the middle of the struggle, there is nothing called as personal choice. अगर आप अपनी कम्युनिटी में शादी नहीं करोगे तो आपका, रिमेंबर दिस थिंग अगेन, अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, पर जिसकी मदर और फादर दोनों टिबेटन नहीं है. फॉर इंस्टेंस कोई टिबेटन लड़की, उसने किसी इंग्लैंड के आदमी से शादी की, उनका एक बच्चा पैदा हुआ. ठीक है, समझना. कल को मान लो टिबेट के अंदर स्ट्रगल शुरू हो जाए, स्ट्रगल, और पूरे टिबेटियंस जो है वो जा रहे हैं फाइट करने के लिए. आपको लगता है जो हाफ टिबेटियन है, मतलब उसकी मदर तो टिबेटन है पर फादर टिबेटन नहीं है, फादर तो टिबेटन है बट मदर टिबेटन नहीं है, वो अपने बच्चे को क्यों भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे. बिकॉज वो कहेंगे कि भाई अगर बच्चा आधा टिबेटन है तो आधा व्हाइट भी तो है. वी विल नॉट सेंड अवर चाइल्ड. ऐसा हमेशा ध्यान देना. जिसकी मदर और फादर दोनों टिबेटन है, यू कैन ट्रस्ट देम कि हाँ ये ऐसा है जिनके बच्चे जाएंगे, बिकॉज वो प्योर ब्लड है उसके अंदर टिबेटन का. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योरिटी. आई एम सेइंग कि जब आप फ्रीडम, अगर आप अपनी कम्युनिटी में शादी नहीं करोगे, आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, आप ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करोगे. एंड सोचो आजकल, इफ यू विल स्पीक दिस मच ट्रूथ, पीपल विल बायकॉट यू. हाउ यू आर सेइंग दिस कि मैरी आउट, डू नॉट मैरी आउटसाइड द कम्युनिटी. यस, दिस इज द पॉइंट. You cannot afford to marry outside your community because you are in the middle of freedom struggle. Yeah. जब आप ये ट्रेंड बन जाएगा कि everybody is marrying outside the community, टिबेट की रेस बचेगी कहाँ? नहीं बचेगी, नहीं बचेगी. No, that's true.
So true. Yeah, of course. Yeah. Go ahead. I'm listening to you. Because when you were saying that, go ahead, go ahead. The thing is कि when I said this first time on Instagram, because मुझे बहुत bluntly truth बोलने की आदत है. आई वॉज लाइक एक इंस्टाग्राम पे मेरा एक टिबेट का लड़का ऐड हुआ. टिबेट का लड़के ने शादी की न्यूजीलैंड में, और उसका बच्चा हाफ टिबेटन है, हाफ यूरोपियन है. एक टिबेट की लड़की थी, उसने शादी की यूरोपियन से. एंड मैंने देखा इस चीज को, एंड आई हैव सीन दिस कि nobody is talking about this. Why? Because sometimes people are very much afraid because of opposition, because people will criticize them if they will say this bluntly. But that's completely fine, because there are many controversies regarding my life. That's completely fine. So let me take this controversy as a privilege. Think about this. If young girls and young boys will start idolizing those people who have married outside their community, तो फिर आपकी कम्युनिटी के अंदर शादियां ही नहीं होंगी. एक भी लड़का लड़की अगर आपकी कम्युनिटी के बाहर मैरिज कर रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ही और शी इज डैमेजिंग द कम्युनिटी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. बिकॉज कल को जो आपके बच्चे होंगे, क्या वो तिब्बत में वैसे ही कंट्रीब्यूट करेंगे जैसे प्योर ब्लड टिबेटन्स करते हैं? नहीं करेंगे. प्लेन एंड सिंपल नहीं करेंगे. उसकी लॉयल्टी भी डिवाइडेड होगी. उसकी लॉयल्टी यूरोप की तरफ भी होगी, उसकी लॉयल्टी तिब्बत की तरफ भी होगी. लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि यूरोप चाइना के पॉलिसी के फेवर में चला जाता है, फॉर इंस्टेंस वन, एक बार, तो क्या होगा? प्रो चाइना, इधर एंटी चाइना. अमेरिका है आज, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली ग्लोरीफाइंग अमेरिका. लिसन वन थिंग वेरी केयरफुल, बिकॉज आई रीड अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन अ लॉट. क्या होता है? देयर आर लाइक डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. So America will always use anti-Chinese forces for his own benefit, not for the welfare of humanity. I'm saying it again. अमेरिका अगर आज तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज उसको चाइना को काउंटर करना है. सिंपल. ऐसे लोग, वी डोंट नीड सच पीपल. वी नीड सच पीपल जो दिल से इस बात को माने कि तिब्बत एक फ्री कंट्री है, एंड वी हैव टू सपोर्ट तिब्बत, नॉट बिकॉज कि उससे हमारा कोई बेनिफिट है, बल्कि टिबेटन्स को उनकी कंट्री वापस मिलनी चाहिए. सिंपल. अगर कंडीशंस अटैच हो जाती है, इफ बट, देन वो सपोर्ट दिल से नहीं. व्हाट इफ कल अमेरिका और चाइना के रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं, क्या होगा? क्या फिर अमेरिका आपको वैसे ही सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा. बट द सैड पार्ट इज कोई इस पे बात नहीं करना चाहता. आप मैरिज की बात करेंगे तो पीपल विल से प्रो फ्रीडम. नो, आई एम नॉट अबाउट दिस प्रो, आई एम नॉट इनटू दिस वोक आइडिया ऑफ प्रो चॉइस. नो. आपकी लाइफ, आपकी कम्युनिटी की लाइफ, जब आप फ्री हो जाए, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, जब आप लासा को अपना कैपिटल बना ले, तिब्बत को फ्री कर ले, तब आप दुनिया में हर जगह शादी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं. हर जगह शादी करें, हर नेशनलिटी में शादी करें. व्हेन यू आर इन अ स्ट्रगल, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रगल, आपके पास ये लिबर्टी नहीं होती पर्सनल चॉइस की. आपका वॉर है, आपको लड़ना है और जीतना है. सिंपल. बट सैड पार्ट इज पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ. No, yeah. I was doing my मैं वो क्या बोलता है जब आपने बोला ना like जब आप सच बोलते हो people don't want to listen and you being so controversial. That's really true. जब आप वो बोल रहा था ना, I was thinking of the cartoon. जब मैंने वो एक कार्टून देखा था, वो कार्टून पे वैसा होता है ना, in social media, there was a two people, दो बंदा, I mean ऐसे में बैठा होता है विंडो में. वो एक बोलता है live, I mean like live funny. वो जो कंफर्टेबल लाइफ. yeah, जो live और ऐसा बोलता है ना हंसा मजाक, वो both people, like people will line up, like so many people line up. So the person who's like who only want to talk about the truth and fact, there's no one to listen. So bottom Yes. line, kind of like we are like that. Yes. जब बोल रहे That's completely fine. Because क्या होता है, जब आपको और मुझको यंग टिबेटियंस सुनते हैं, लिसन करते हैं, Cheers. उनको पता है. बट आई हैव वाटर विद मी. This So yeah. water too, don't worry. So Yeah.
क्या हुआ कि बहुत सारे यंग टिबेटियंस लड़कों ने, लड़कियों ने और ओल्ड एज लोगों ने मुझे मैसेज किया। क्या मैसेज किया कि फर्स्ट टाइम आपने वो कहा जो सच है, एंड Yeah, वी फील द सेम। yeah. क्योंकि लोग सच, ऐसे लोग भी हैं टिबेटन सोसाइटी के अंदर, दे वांट टू हियर द ट्रूथ। देयर आर सम पीपल, दे वांट टू लिव इन देयर ओन ककून। अपने बस वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि क्या होता है Oh, कि within the आ, shell. पर, पर्दा लगा लेते हैं, Yeah. विंडो बंद कर लेते हैं और लाइट ऑफ कर लेते हैं, एंड दे थिंक कि रात हो गई, बट इन रियलिटी सुबह होती है। देखो, दो चीजें होती है, सी वेव्स को, समंदर की लहरों को, सूरज की रोशनी को और ट्रुथ को कोई नहीं रोक सकता। That's true. देयर इज अ वेरी आइकॉनिक डायलॉग इन अ अमेरिकन मूवी, अ फ्यू गुड men, that Tom Cruise is shouting, I want to know the truth, I want to know the truth. And the person says, you can't handle the truth. Because, truth is so, so, so dark. The Yeah. thing is, we can change the truth, but only when we will mainstream the thing called as truth. कि हमको सच बोलना है, बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं, अपनी कम्युनिटी है, Yeah. फ्रीडम स्ट्रगल है। हमें हमें अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए अपनी बात रखनी पड़ेगी। एंड वन गर्ल वन गर्ल प्लेड अ वेरी डेंजरस कार्ड अगेंस्ट मी, एंड 2 मिनट के लिए पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं सोशल बाइकआउट ना हो जाए। रीजन इज कि मैं मिडिल वे एज अ आइडिया और रामजिन एज अ आइडिया पे बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि मिडिल वे के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और 2-3 बातें मैंने कही। अब उस लड़की ने क्या टेक्स्ट किया कि मिडिल वे को हिज होलीनेस प्रमोट करते हैं, तो आपने ये कैसे बोल दिया? मैंने कहा, यू आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस कार्ड, Yeah. बिकॉज हिज होलीनेस दलाई लामा जी इज अ गॉड फॉर अस, फॉर Yeah. एवरीवन। मैंने खाली मिडिल वे एज अ आइडिया की बात, Yeah. एंड यू हैव यूज्ड द नेम ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा जी। Yeah. नाउ आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बिकॉज यू विल से कि ये जो है हमारे रिलीजियस अथॉरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहा है। आई सेड द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हिज होलीनेस दलाई लामा, वो किसी भी टिबेटन के जितना ही है या उनसे भी थोड़ा ज्यादा है। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई वर्शिप हिम अ लॉट, बट आई सेड कि डोंट यूज रिलीजन एज योर डिफेंस। मैंने कहा, मैंने सिर्फ आइडियाज के बारे में बात की थी। उस टाइम के बाद मैंने कभी मिडल वे अप्रोच पर या रामजन पे बात नहीं, बिकॉज वन एक ऐसा इंसान जिसको Yeah. मैंने कहा कि आओ डिस्कस करते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट आइडियाज, दे हैव प्लेड अ रिलीजियस कार्ड। द रिलीजियस कार्ड इज सो डेंजरस बिकॉज I totally पीपल understand. विल यूज इट अगेंस्ट यू, Yeah. दे विल यूज अगेंस्ट यू। आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने मिडल वे की बात की। अच्छा चलो, अगर सीटीए और हिज होलीनेस सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी मिडल वे को सपोर्ट करता हूँ, फेयर इनफ, आई सपोर्ट मिडल वे कंप्लीटली, ठीक है। व्हाट दैट लाइक, अब नहीं बोलना चाहिए, बट क्या किया इन लोगों ने? आइडियाज पे बात नहीं, डिबेट पे बात नहीं, जस्ट रिलीजन का कार्ड शो कर दिया। अब अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो क्या होगा कि इसने रिलीजन के खिलाफ बोला है, एंड जो लोग मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे, दे विल से कि हम इस इंसान को बाइकआउट कर रहे हैं। इट इज अ ट्रैप, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रैप, बट अनफॉर्चुनेटली लोग दोनों आइडियाज पर बात करने को तैयार नहीं। किसने बोला कि ये सीटीए का ऑफिशियल पोजीशन है? मैंने कहा, आई रिस्पेक्ट सीटीए अ लॉट, आई रिस्पेक्ट देयर पोजीशन, आई फॉलो देयर पोजीशन। द थिंग इज, आइडियाज पर एक बार बात तो कर लो। क्या Yeah. पता कंप्लीट फ्रीडम वालों से बात करके आपका आइडिया थोड़ा और शार्प हो जाए, अच्छा हो जाए, बट नो, nobody wants to listen, and everybody wants to play a religious card. So I just took a back step. मैंने अपने टिबेटन दोस्तों से डिस्कस किया। सारे टिबेटन दोस्तों ने बोला कि यार ये कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है तुम्हारे खिलाफ? मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली, और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, इमेजिन अगर आप कल को कुछ बोल दो एंड पीपल विल पोर्ट्रे कि ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट अवर रिलीजन, आपका तो करियर खत्म हो जाएगा, That's आपके खुद के फैमिली मेंबर्स आपके खिलाफ हो जाएंगे। सैड that's पार्ट, वेरी सैड। yeah. It's this is some kind of yeah. I totally understand. And Jeb, like the main thing. I'm pretty sure you're not gonna give up because I can see that you're a strong person. Like both motivate and
but still, just stay strong. Like few people will come and say this kind of stuff. Just ignore. You know what I Yes. mean? So, so yeah. I wanted to talk about this picture. I think this was back then, and I think the I get it. Wait, I have to identify in this picture. Nitin Kusang, the Dawa Singh is there. the It is flag. around 2020 or 21. Yes, we were protesting on 10 March, and it was the most iconic protest. Most like oh my god, like this was like or see we used to be like we were very dominant. We used to dominate our college. Very beautiful campus. In Mhm. 10 March, this is not a complete picture. Everyone was so charged up, full of energy. Like एकदम बहुत सारे एकदम fiery speeches deliver किए जा रहे थे. Everybody was listening. And ये कहाँ हो रहा है? हिमाचल, उत्तराखंड, साउथ से बहुत दूर गुजरात में, जहां पर कोई मेजर टिबेटन सेटलमेंट नहीं है. Everybody was so charged up, Mhm. and the credit goes to the RTYC leadership. Mhm. Because RTYC leadership ने क्या किया? लोगों को जोड़ा. I was waving it. Look at the जो post जिन्होंने कार्ड होल्ड किए हैं. Everybody so charged up. Oh my god! I really I was like looking for nostalgia. Like Nitin Kusang है यहाँ पे, Suptin Dorji है यहाँ पे. Oh my god! Like, golden days to be honest. Good old. Power Singh is there. That's you, right, with the flag. Yeah, And with the flag. and This is me. This is me. and I think you're the only Indian in this picture. There were no, swipe right, swipe right, swipe right. This side, this side, this side, this side more, this side more, bit more. This guy, this guy, he's from Manipur. Like Oh, RTYC, like yeah, I was one of those Indians जिसने हर activity में participate किया. But yeah. RTYC बड़ौदा में क्या किया? Indians को भी काफी जोड़ा. And all those जो जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, everybody is a scholar. Everybody. They all were the most intelligent students of their own faculties and departments. This is so true. Tibetan independent and Indian security, like yeah. Like this is Jigar Inamdar sir. Jigar Inamdar sir is a very powerful person of this city, Baroda. And Mm. Jigar Inamdar sir have always supported Tibetan freedom struggle. Always. Oh, thank you, thank you. That's good to It know. is RTYC in Baroda is something else. I know about other RTYC. Everybody is doing a great job, and that's why Oh, I always love and respect Tibetan organizations. Always. I just had one few disagreement with few organizations who were more involved with Middle East and Europe rather than their own country. I totally understand. I just want I think this was, I achieved I stood first in a national debate competition, and they were shooting my video, oh, and and in the part of like before finals they played my journey video, and this is a part of my journey video. This is a Tibetan flag and four people: Dechen Kusan, Dechen Pember, Dawa Sering, and Tenzin Chile with me. hmm. And this is my college campus, and I waved this flag Oh, this is there the picture was taken in your college campus. Oh, in college campus, lush green campus. oh, good old days, huh? Yeah, and this thing is that my college was like it was built in 1881, Oh wow, way back in those days, 1881. You way talk. back. And I love this Tibetan flag. I also have one Tibetan flag in my house, and I like still I have this T-shirt of Om Yeah, Mani Padme Hum. Yes, yeah. sir. And I think I have four to five this. you're doing some speeches, I guess. I think this is the video I've seen. Uh, yes, this is and you see a lot of Tibetan. It's the most like busy street of my city, Oh, and we used imagine we used to protest there, yeah, delivering speeches. You can see a policeman behind me. yeah, 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 Every, yeah, that was a golden time. This yeah. was a very iconic days when like I had a great muscles that time. I Mm. was like Tenzin Chile and me. We both were gym partners, Yeah, I can and you see all bicep. those things: free Tibet, save Tibet.
Wonderful slogan. right? Yeah, Nothing controversial. yeah. The main, because we're demanding the truth, right? So that's the reason. It's Yes. There's one picture that this is the picture that I'm okay. Let me just not this one. I think I didn't get the other picture. Anyway, this one I really wanted to share this one. I feel like this is really important. Like most of the people. uh, Before COVID, a few like this is very iconic protest was there. Like everybody was Tibet freedom, India security. This picture was clicked by Tenzin Nenchak. Nenda was a vice president back then, No, and this was a very iconic protest. Very iconic protest. yeah, it's I can. Yeah, I mean you're in the video that you shared जब आपने वो YouTube में वीडियो में बोला था ना you it's really true because जब 10 March होता है like everyone will come out but I'm really grateful that all people come out on 10 March but Yes. I feel like after a few years after 10 years or 15 years that 10 March not going to stay same. That's what I feel. You know what The I mean? sad part. That's the sad part Sad. क्योंकि that's what I feel. See, अभी आपने बोला वो वीडियो में बोला था most of people like वो ज्यादा दुनिया के पॉलिटिक्स में ध्यान देता है मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है अपना देश में इतना you are really true because whatever it's happening inside Tibet most of these small it's not a small thing if you look at it right because our own brother and sister are suffering over there वो न्यूज़ वो लोग इतना ध्यान नहीं देता है ना that's another reason that I get more pissed and and like there's so many dates like May 17th September 27 there's so many dates and these are the special that I feel like Tibetan people should be more focused to because May 17th is the Panchen Lama when he got like kidnapped. Most people Yes. talk about like celebration April 25th Panchen 11th Panchen Lama birthday, which is good. Everybody wants to celebrate birthday, but if you celebrate birthday, uh, people will enjoy and people will know. But most people they don't know that he is the world's youngest political prisoner, and that happened Yes. in Yes. that happened in May 17th. So if you go out and talk more about May 17th, I feel like it will be more effective to the non-Tibetan people, you know, and You know, and there are two emotions in the world या और ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर सबसे प्योर होते हैं. एक होता है पेन का, एक होता है सैडनेस का. सैडनेस एंड पेन सबसे रियल इमोशन होते हैं. तो अगर आप अपने सैड हिस्ट्री को, पेनफुल हिस्ट्री को कॉन्स्टेंटली याद दिलाओगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन को, देन दे विल फाइट. yeah, that's really true. That's what I was telling because see Toronto में हम लोग 10 March करता है now back then when we used to do 10 March we used to have like at least like 15 to 1800 people join करता था ना so every year is वाओ. every year is kind of like same but I feel like it should grow you know why because इधर का population Tibetan वो grow कर रहा है ना so why the 10 March is like pretty much the same people you know what I mean एंड in my city in Baroda, the now the 10 March is not same anymore because population कम है. yeah आरटीवाईसी बड़ौदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट लोग मतलब टिबेटन्स को कहाँ से लेकर आएंगे वो, that's बहुत that कम है. yeah because 25. अब उसमें क्या होता है, जैसे कि ना मेनी टिबेटियंस दे यूज टू लिव इन डेल्यूजन. द थिंग इज ना, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. एंड द थिंग इज मेनी टिबेटियंस दे आर वेरी मच हैप्पी इन देयर ओन माइंड. खुद के दिमाग के अंदर बहुत खुश है. क्या होता है कि एक दिन होता है 10 मार्च, एक होता है आरटीवाईसी फाउंडेशन डे, एक होता है हर कॉलेज का फ्रेशर, एक होता है हर कॉलेज का फेयरवेल. ऐसे करते करते आप 10 डेज, 10 दिन है आपके पास. जब आप व्हाट अबाउट द अदर 355 डेज, yeah इन 10 डेज के अंदर आप कुछ करो ना करो उतना फर्क नहीं पड़ता. 355 डेज में क्या करते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है. that's true
10 मार्क्स क्या है? 10 मार्क्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। 10 मार्क्स की प्रैक्टिस तो आपको पूरे साल करनी है। Yeah. क्यों ऐसा नहीं होता कि आप उसके बाद लोसर होता है, सो लोसर के अंदर आप बहुत ज्यादा लोगों को इमोशनली चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल वांट्स टू लाइक दे वांट टू बी हैप्पी। Yeah, celebrate and बट yeah. एक बार मैंने कहा था कि लोसर का सेलिब्रेशन लहासा में होता तो ज्यादा अच्छा होता, कैपिटल के अंदर, पोताला पैलेस के अंदर। That's तो true. देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू फेस अनकंफर्टेबल ट्रूथ। अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया है और मैं उसको बोल दूं कि यार कोई कैंसर वैंसर नहीं है, सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा, तो वो तो मर जाएगा। अब मैंने एक बात कही, देखो क्या होता है, टिबेटियंस दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग द मेन स्ट्रीम प्रोपेगेंडा कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है दुनिया में। जिसने दुनिया को ओवर पॉपुलेट किया है वो अपनी पॉपुलेशन कम करे, हमारी प्रायोरिटी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। आई मीन लेट्स स्पीक ब्लंटली, एक बच्चे दो बच्चे पैदा करके आप फाइट कर पाओगे No. अगेंस्ट द लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड? ध्यान देना, चाइना की मिलिट्री फोर्स सबसे बड़ी, मिलिट्री स्पेंडिंग तो अमेरिका का ज्यादा है। Yeah. आप एक बच्चे को बेटे पैदा कर रहा है, आप उसको जाके बोलो कि एक बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो, ज्यादा करो। नहीं, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। टिबेटियंस आर एक्चुअली थिंकिंग एक यूरोपियन पैटर्न के बेसिस पे वो खुद सोच रहे हैं कि भाई 4-5 बच्चे अगर आप नहीं करोगे, उन बच्चों को मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ट्रेनिंग नहीं दोगे, किसी को स्कॉलर नहीं बनाओगे, तो सोसाइटी आप कहां से लाओगे अपने? आप एट द एंड आपको चाइना से डायरेक्ट फाइट करनी पड़ेगी। आप मानो या ना मानो, यू थिंक कि इतना नेचुरल रिसोर्सेज से भरा तिब्बत चाइना इजीली छोड़ देगा? चाइना No. आपसे बात करेगा? द थिंग इज, सोनम, सोनम क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझना है, आप वीक हो और मैं पावरफुल हूं, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो दैट आई कैन क्रश यू, आई कैन किल यू एनी टाइम। Yes, yes. जो लोग ये कहते हैं कि हम चाइना से नेगोशिएट करेंगे, आप ये बताइए ना कि इतने साल चाइना से नेगोशिएट करके आपको क्या मिला? आपके बच्चे तिब्बत से आना बंद हो गए, आमदो के अंदर मोनेस्ट्री तोड़ दी गई, Yes. नन्स का मास रेप हुआ, टिबेटन अभी न्यू जो स्कूल पॉलिसी आई है, बचपन से टिबेटन बच्चों को चाइनीज पढ़ाया जाता है। टिबेटियन बच्चे तिब्बत के ज्यादा बड़े एनिमी बन गए हैं, चाइना के अंदर रहते हैं, उनको लगता है कि ये टिबेटन जो है सेपरेटिस्ट है। बॉर्डर पे क्या होता है, चाइना की तरफ से भी लड़ने के लिए टिबेटन आते हैं। Yeah. तो क्या मिला, नेगोशिएशन करके क्या मिला? 1 सेंटीमीटर जमीन भी आपको मिल पाई? नहीं मिल पाई। मैं आपसे तब बात करूंगा जब मुझे पता है कि यार ये सोनम नाम का आदमी मुझे डैमेज कर सकता है, मुझे मार सकता है, तब मैं आपके साथ डायलॉग करूंगा। That's true. डायलॉग करने के लिए भी आपको अपनी पावर शो करनी पड़ेगी कि वी आर केपेबल ऑफ दिस। दुनिया में, दुनिया कंट्रोल होती है आउट ऑफ फियर, नॉट लव। ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं चल रही है हिंदी सिनेमा की कि दिल बदल दिया, दिल किसी का नहीं बदलता। प्योर एंड प्रो, हार्ट एक बायोलॉजिकल ऑर्गन होता है। माइंड चेंज कैसे होता है? माइंड चेंज होता है डर से। अभी तक लोगों के मन में चाइना का डर है कि दलाई लामा जी की फोटो रखेंगे तो चाइनीज मारेंगे आके। जब चाइनीज के मन में ये डर होगा कि अगर हम टिबेटन को उनकी लैंग्वेज नहीं सीखने देंगे, देन टिबेटन विल ऑल्सो बीट अस, तब जाके वो आपसे बात करेंगे। एकदम कंप्लीट फ्रीडम के अप्रोच पे अगर आप काम करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिलना शुरू होगा। अदरवाइज अगर कोई चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, वो आपसे क्यों बात करेगा? आप क्या ऑफर कर रहे हो? आप Yeah. उनको कुछ मनी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो भी नहीं करेगा। आप सोचो चाइना के बारे में, इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन क्या होगा टिबेटन्स के लिए? दे हैव स्टैब्लिश्ड अ फेक पेंशन लामा। Yeah. पता है आपको, एक फेक पेंशन लामा को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। दे आर कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएटिंग यू कि तुम लोग क्या कर सकते हो, और आप किस डिल्यूजन में है? आपसे वो बात तब करेंगे जब आप उनको अपना एक पावरफुल साइड दिखाएंगे। वाय दशहरा, भगवान राम बहुत पीसफुल, दुनिया के सबसे पीसफुल इंसान थे, बट एट द एंड उन्होंने भी वेपन्स उठाए, फाइट बैक किया, अपना एक अपना फियरलेस साइड दिखाया। टिबेटन्स को दिखाना पड़ेगा अपना फियरलेस साइड। आपसे इतने साल हो गए, क्या आपको
खाम के रीजन में, उत्सांग के रीजन में, आमदो के रीजन में 1% भी फ्रीडम मिली, 1%। नया स्कूलिंग पॉलिसी आ गया, फेक पेंशन लामा को स्टैब्लिश कर दिया, जो रियल पेंशन लामा है उन्हें किडनैप कर दिया। उन्होंने तो पेंशन लामा जी को भी नहीं छोड़ा। मैं यही कह रहा था ना, आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हो बट उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन आई कैनॉट फीड लाइज यार कोई बात नहीं, हार्डवर्क तो क्या नहीं। अगर हार्डवर्क करके सक्सेस नहीं मिला तो वो हार्डवर्क वेस्ट है यार। कौन, हु केयर्स। मैं ये बोल दूं कि मैं 16 आवर्स पढ़ाई करता हूं और मेरे नंबर आते हैं 100 में से एक, तो क्या मतलब उसका। मैंने वही कहा अपनी वीडियो में कि आपके पास कुछ प्लान ऑफ एक्शन है कि 5 साल में हमारा स्ट्रगल यहां जाएगा, 5 साल में हम इतनी कंट्रीज के अंदर तिब्बत को लेकर रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। या कोई तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं तो हम वहां के हर पॉलिटिशियन को अवेयर करेंगे। आप अगर रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की साइड लोगे तो रशिया को अपने खिलाफ कर रहे हो आप। इंटेलिजेंट आदमी दोनों को अपने फेवर में करे कि मैं एक ऐसे पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश करूं कि व्लादिमीर पुतिन भी मेरी बात करे और यूक्रेन के लोग भी मेरी बात करें। आप मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट करोगे जाके तो क्या होगा, सोसाइटी में अगर एक का साइड लोगे तो दूसरा खिलाफ होगा। आपको क्यों इन्वॉल्व होना है हर चीज में। आप लीडर हो, आप तो खुद विक्टिम हो यार। दूसरी बात ये, चलो यहाँ इंडिया के अंदर तो चलो चाइनीज लोगों की कुछ हिम्मत नहीं, कुछ नहीं कर सकते। फॉरेन के अंदर चाइनीज कम्युनिटी भी रहती है, चाइनीज इमिग्रेंट्स भी रहते हैं, एजुकेटेड भी है, सक्सेसफुल भी है। उन लोगों ने, अब नाउ आई विल कम टू दिस पॉइंट, जब मैंने कहा कि कोई बुक लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, और बाप रे इस पर तो इतना कंट्रोवर्सी होता है। थिंक अबाउट लास्ट मेजर बुक जो आप लोग कहते हैं, एक बुक है तिब्बत बिट्रेड बाय द वर्ल्ड, ये 2021 में है, आज से 3 साल पहले। एक है ट्रूथ ऑफ तिब्बत, ये 4 साल पहले है। और ये दोनों किताबें किसी इंडियन ने लिखी, किसी तिब्बतन ने नहीं लिखी। एक किताब है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, ये 2024 में आई। मैंने क्या कहा था उस वीडियो में कि क्या कोई ऐसी बुक आई है जिसने किसी नए डिबेट को जन्म दिया। आप 50 बुक लिख रहे हैं, तिब्बत पर बुक्स लिखी गई हैं, बट उनकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है? क्या वो पॉपुलर है? क्या उस बुक के आने के बाद लाइक डिबेट स्टार्ट हुई, लाइक पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक ऑन स्ट्रीट? क्या एकेडमिक सर्कल्स में वो बुक पॉपुलर हुई? क्या वो बुक बेस्ट सेलर बनी? क्या लोगों को पता है इन बुक्स के बारे में? कब लिखी गई है बुक्स तिब्बतन्स के द्वारा? 2011, 14, 16। आपको हर 6 महीने, हर 4 महीने में कुछ बुक, आर्टिकल, एटलीस्ट एक शॉर्ट फिल्म बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं है कि जब दुनिया में, लेट्स से कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुक्स तिब्बत पे क्यों नहीं लिखी गई? इमेजिन यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, आपको वहां पे तिब्बत से रिलेटेड एक बुक नहीं मिलेगी। बट इफ यू विल राइट अराउंड 100 to 1000 बुक्स ऑन तिब्बत, हर लाइब्रेरी के अंदर आपको तिब्बत से रिलेटेड बुक्स मिलेगी। यू गो टू एनी एयरपोर्ट, क्या आपको तिब्बत से रिलेटेड कोई बुक देखने को मिलती है? नहीं मिलती। यू गो टू एनी कॉफी शॉप जहां पर कई सारी रोमांटिक नॉवेल्स होती है, वहां पे आपको तिब्बत से रिलेटेड बुक्स देखने को मिलती है? नहीं मिलती। तो बुक लिखना अलग चीज है। मैं अपने घर के अंदर बंद होकर अपने आप को बहुत स्टाइलिश बना लूं, हैंडसम बन जाऊं, और मैं डिक्लेयर कर दूं कि मैं इस रूम का माइकल जैक्सन हूं, उससे क्या होगा? आप बाहर तो जाना पड़ेगा। चलो ये जो तो बुक है, ट्रूथ ऑफ तिब्बत, तिब्बत बिट्रेड बाय द वर्ल्ड, मैंने भी पढ़ी है। इस बुक को कितनी बार ऐसा हुआ कि तिब्बतियंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया रोड पे? नहीं किया। अगर आप फेल हो गए हो तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम? That's true, yeah. 6 मिलियन पॉपुलेशन है तिब्बतियंस की, अराउंड 6 मिलियन के आसपास ना, या 6 बिलियन, Yeah, मतलब एक yeah, बिलियन, yeah. मतलब आप मान लो 60 लाख तिब्बतियंस है दुनिया। 60 लाख तिब्बतियंस में, नहीं नहीं सॉरी, जितने भी तिब्बतन पॉपुलेशन दुनिया में है, इंडिया में और यूरोप में, Yeah, हम उनको कंबाइन कर देते हैं एक बार। all together. लेट्स नॉट टॉक अबाउट सेपरेटली। बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया जब मैंने यूरोप की बात की, बिकॉज मैं देखता हूँ यूरोप के तिब्बतन्स को कि दे आर वेरी मच बिजी इन कन्विंसिंग अदर पीपल। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि मैं एक ब्लैक हूं, एक अफ्रीकन अमेरिकन, मैं अगर उसको सपोर्ट कर रहा हूं
और ब्लैक अफ्रीकन में कोई ऐसा है जो एंटी वाइट है। तो अगर मैं एक कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगा मतलब मैं दूसरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बना रहा हूं। जस्टिस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। आपकी जस्टिस की डेफिनेशन अलग है, मेरे लिए अलग है। Yeah, मुझे तो हर कम्युनिटी का सपोर्ट जीतना है ना। आई yeah, वॉन्ट टू कन्विंस एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लॉबी कर रहा हूं, ग्रुपबाजी कर रहा हूं। ये कहा था मैंने, देखो 6 मिलियन टिबेटन्स की बात होती है, ठीक है। इसमें कम से कम, लेट्स टेक द मिनिमम नंबर, 1000 ऐसे लोग होंगे जो पीएचडी कर रहे होंगे, कम से कम अराउंड 1000 लोग। अराउंड कम से कम 6 मिलियन के अंदर 1 लाख बच्चे तो होंगे जो एमए कर रहे होंगे, मास्टर्स कर रहे होंगे अलग अलग कॉलेजेस में। इनका कोई ग्रुप क्यों नहीं है जो ये डिसाइड करे कि हमें अपने सिटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर हर वीक एक आर्टिकल लिखना है तिब्बत से रिलेटेड। या जो पीएचडी स्कॉलर्स है तिब्बतन दुनिया भर के अंदर, रामदेव सपोर्टर या मिडिल वे सपोर्टर, वो अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाते कि हम अपना रिसर्च पेपर तिब्बत से रिलेटेड टॉपिक पे लिखेंगे। जितने पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो क्यों डिसाइड नहीं करते ग्रुप बना के कि हम अपना पीएचडी तिब्बत से रिलेटेड टॉपिक पे करेंगे। जितने राइटर्स हैं वो क्यों ये डिसाइड नहीं करते कि हम तिब्बत से रिलेटेड कोई बुक हर 6 मंथ या हर एक 1 ईयर पे लिखेंगे और उसको अलग अलग तिब्बत ऑर्गेनाइजेशन, तिब्बतियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तिब्बतियन सेटलमेंट एंडोर्स करेगी उस बुक। क्यों नहीं होता है? आपके जितने भी लोग तिब्बतन को जानते हैं, कैसे जानते हैं? बहुत सारे लोग, यार तिब्बतन मार्केट लगता है, बस। क्या ये हमारी आइडेंटिटी बन के रह जाएगी? बहुत सारे कॉमन मासेस तक वो बात क्यों नहीं पहुंचती है? जो कॉलेज के टिबेटन स्टूडेंट्स हैं, जो जिस पान शॉप पे जाके सिगरेट पीते हैं, उस पान शॉप के ओनर से लेके उनके कॉलेज के प्रोफेसर से लेके उनके शहर के पॉलिटिशियन तक सबको तिब्बत के बारे में क्यों नहीं पता है? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? yeah, ऐसा क्यों नहीं होता? लास्ट तिब्बत के ऊपर वर्ल्ड क्लास रिसर्च पेपर कब लिखा गया? ऑक्सफोर्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर, बार बार हम, आपने 10 साल में एक टॉक डिलीवर किया, क्या करोगे उसका? रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना मसल बिल्डअप करना होता है तो आप एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। आप तिब्बत से रिलेटेड कोई 50 या 100 बुक्स के नाम याद होने चाहिए लोगों को। तिब्बत का बुक फेयर क्यों नहीं होता अलग अलग शहर में? लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, टोरंटो, लंदन, पेरिस, अलग अलग जगह तिब्बत बुक फेयर, जहां पे अराउंड 100 बुक्स हो। 100 तिब्बत के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, स्पेसिफिकली तिब्बत की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, वो पता चल जाएगा गूगल से। तिब्बत फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड yeah. It's कितने ऐसे लोग हैं आज। अब देखो तिब्बत के अंदर, देखो ये हम बहुत बात करते हैं फाइट नहीं करना चाहिए। तिब्बत के अंदर बहुत आइकॉनिक खाम्पा वॉरियर्स थे जिन्होंने yeah, वॉर किया, फाइट बैक किया। yeah. खाम्पा की तलवार दुनिया में फेमस है। उन वॉरियर्स पे बुक क्यों नहीं लिखी गई? क्या कोई तिब्बत का लड़का लड़की 10 खाम्पा वॉरियर्स के बारे में बता, तिब्बतन वॉरियर्स के बारे में बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या हम फेल हुए हैं? ऑफ कोर्स। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हम फेल हो गए हैं, तभी हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है, वरना हम हर बार फेल होते रहेंगे बिकॉज हमने कभी आउटकम को एनालाइज नहीं किया, कभी नहीं किया। Yeah. That's true. This is what I feel too. Like our generation, like मैं वही बोल रहा था कि like our grandparents, because they saw the real struggle, right? वो both struggle यस, there, and they know what's the real struggle. And then our parents were like kind of like easy life, and then we were like more like a silver spoon. So, but मैं वही बोल रहा था कि अभी 10 मार्च में बहुत तिब्बतन निकल आता है. After 10, 20, 30 years, I feel like 10 March not going to stay same because यस, यस, we need to educate and motivate our younger generation, right? Talk more about. You're right. आपने सही बोला क्योंकि there are a few things that we need to repeat.
right? जब repeat नहीं करेगा तो फिर they're not gonna know what really happened. The problems is it. Anyway, so I know, like we said, we're gonna talk like probably like 30, 40, 20 minutes, but we went more. And I feel like we need to make like second or third part next time to have a Yes, cover. I know the thing is because I'm very happy because you are the only person जिसने मुझे अपना बात रखने का एक चांस दिया. Oh no, no, no. लोग बात नहीं करना चाहते सोनम. बात क्या है सोनम, लोग बात ही नहीं करना चाहते. I I आज I understand, yeah. seen this कि I have seen boycott of runs in people कि भाई उनसे बात ही नहीं करनी. आपके अपने ब्रदर्स हैं, आपके अपने सिस्टर्स हैं. Yeah. आपको पता है क्या होता है सोनम? अभी तो हम फ्री टिबेट की बात करते हैं. अगर आप आज 5 साल में हर साल हर 6 मंथ पे बुक लिखोगे और व्हेन यू विल कंप्लीट अ लिटरेचर ऑफ 100 बुक्स, आप हर बड़ी कंट्री में इंक्लूडिंग रशिया, किसी कंट्री का किसी कंट्री से वॉर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन. अगर मेरी मदर बीमार है, अगर मेरे फादर बीमार है, तो मैं कम्युनिटी वर्क नहीं करूंगा, मैं पहले उनको उनको ठीक करूंगा. That's यहाँ it. पे क्या होता है, कल को जब आप 100 बुक्स लिखोगे तब आपका और चाइनीज का आमने सामने डिबेट होगा. चाइनीज लोगों के भी अपने लॉजिक हैं. गलत है, गलत है. पर मान लो किसी अफ्रीकन के सामने एक चाइनीज जाए और एक टिबेटियन जाए. एक टिबेटियन जिसको कुछ नहीं पता है और एक चाइनीज जिसने बहुत शार्पली अपने आइडियाज को एकदम तलवार की धार की तरह शेप दिया है. अफ्रीकन बोलेगा कि यार तिब्बत तो चाइना का पार्ट है. Yeah. क्यों? हमने आइडियाज तक. अभी तो इंडिया के अंदर तो चले, हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत एंटी चाइना पॉलिसी है, दैट्स वेरी गुड. कल को आपकी डिबेट अमेरिका की स्ट्रीट पे हो, जर्मनी की स्ट्रीट पे हो, कैसे हराओगे चाइनीज लोगों को डिबेट? पढ़कर, लिखकर. क्या हमारा कोई मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है? नहीं हो रही है. टिबेटन यंगस्टर्स की हेल्थ पे कौन बात करेगा? अपनी मैरिज कब कर रहे हैं? टिबेटन लोगों को मैंने देखा है मैरिज ही नहीं करते. देखो, अभी आपको आउट ऑफ लव मैरिज नहीं करना है, पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए मैरिज करना है. अगर आप फैमिली को बिल्डअप नहीं कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो. अगर एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आप आर्टिकल और बुक नहीं लिख रहे हो, देन यू आर अ फेलियर एंड यू आर अ बर्डन ऑन योर सोसाइटी. बुरी बात है. That's true. Fact, no, no, fact is fact. That's really true. क्योंकि I feel like in वही मैं बोल रहा था जब मैंने आपका वीडियो देखा था ना. I was out of town and one of my friends sent me that video and वो वीडियो भी ना कोई टिबेटन नेम और यूट्यूबर वो उसका पिक्चर भी नहीं था. उसका पिक्चर भी नहीं था. He posted and उसका व्यू बहुत बड़ा हो गया था. I mean there was a lot of views and I was like और उधर में लिखा था आपका नाम लिखा था, राइट. देन आई वाज ट्राइंग टू सर्च यू यू नो लाइक ये बंदा कहाँ मिलेगा मेरे को. इंस्टाग्राम में सर्च किया, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था. फेसबुक, माय फेसबुक अकाउंट इज हैक्ड बिकॉज hacked for a long ओ, time. Yeah, and my social media, my email, Instagram always get hacked. So in my phone, I have to buy like वो security pay करके I use that so that not gonna hacked again. I'm using my mom's Facebook. You have no idea. ओ माय गॉड. Yeah. So anyway, so bottom line, मैं आपको search कर रहा था. So finally I met you, and so मैं वही बोलना चाहता हूँ. जो फैक्ट बोलेगा ना, people always run away because they just want to listen to good stuff, right? Anyway, so I'm not going to waste any more time, and I know you might be in rush because I think it's almost 9 or 10, and over here it's midnight. टू डिफरेंट टाइम, टू डिफरेंट टाइम जोन, बट थैंक्स टू माय कॉलेज मुझे दिन में सोने की और रात में जगने की आदत लग चुकी है. So anyway, over here midnight, 12 बजने में अभी 15 मिनट है इधर. So look at my eyes. I'm kind of sleepy too. I need to wake up tomorrow morning. So, तो anyway, डिस्पाइट बीइंग यंग, आप रात में सोते हो क्या? मतलब मुझे लगता है yeah. हर टिबेटन रात में सोता है, दिन में सोता है. I know. I used to do that, but not anymore. Because when you have more responsibility and when you have now I have to reach at office at at 9 anyway. So the bottom line, I want to say this before we end our conversation. Is there anything you want to say? A few words that before we end our conversation, or maybe I feel like we need to do a second part. Maybe next Yes, next yes, time we will make we will do. We will, yeah yeah, we we will make a series.
only thing that I want to say first of all is I want to express my gratitude towards you. आप बहुत काइंड रहे मेरे लिए, RTYC बड़ौदा, RTYC टोरंटो बोथ. For young generation, one simple message कि before forming any opinion about anyone, try to listen what the person is saying. पहली बार मतलब somebody said कि you are not a Tibetan. Exactly. Biologically पूरी दुनिया Tibetan तो नहीं हो सकती. But I love Tibetan more than many Tibetans. I love Tibet more than many Tibetans. Sad part. अगर कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा है ना, try to listen. हम रांगजेन हो, हम कंप्लीट फ्रीडम के सपोर्टर हो, जैसे मैं कंप्लीट फ्रीडम का सपोर्टर हूँ, आप मिडिल वे के सपोर्टर हो, हेट मत करो, कॉमन टेबल पर आओ, बात करो, एक नेटवर्क बनाओ, प्लान ऑफ एक्शन. एक साल में क्या, आप एक दवाई खरीदते हो तो आप चेक करते हो कि इससे मेरा बीमारी डिजीज ठीक होगा कि नहीं होगा. आपका स्ट्रगल के लिए यू डोंट हैव एनीथिंग, एंड ऑल दोस टिबेटन ऑर्गेनाइजेशंस यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट समटाइम्स डू नॉट जस्ट मिसयूज द फंड्स यूजलेस चीजों पे. जो टिबेटन रिच लोग हैं, हु आर वेरी रिच, ट्राई टू फंड यंग स्कॉलर. पैसा नहीं होता बुक पब्लिश करने का, यंग लोगों को पैसा दो, बुक्स लिखो, एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. सिंपल. यूनिटी होना बहुत जरूरी है. एंड एवरी टिबेटन, तो या मैं दिल से आप लोग मेरा फैमिली हो, एंड आई लव यू ऑल, एंड हम मिलते रहेंगे. Sure, मिलते रहेंगे. And honestly, like, whatever your आपका वो emotions and the interest, like being an Indian, interest and all these emotions toward our struggle, Tibetan cause पे ना, like I'm really thankful. And I feel like आप जैसा बंदा ना, आप जैसा बंदा, if we have like 100, like, it will be like more powerful, it'll be like. Anyway, and I'm not going to waste any more time. So I will see you soon. Let's chat again. Sure. We will schedule and we will do one more time Hacker night. Okay? Sure. And Sure. and thanks for your video. Honestly, I really appreciate it, and I'm doing my best to share your channel, your actual original video link, so that more of you will be on your channel. So anyway, thank you, sir. Thank you. And I'll see you soon. Thank you. Yeah, sure. Bye. Good day. Bye. Best of luck.